Hello everyone, I am Anshuman S. Modak from MDB Electrosoft Private Limited. We make you technically confident. आज हम बात करने वाले हैं एक नए प्रोजेक्ट के बारे में. प्रोजेक्ट का नाम है लिक्विड वेंडिंग मशीन्स. Liquid vending machines, as we know, there are multiple vending machines for snacks and multiple things. So we are going to design a vending machine for liquid substances such as water, soft drinks, milk or juice. We are going to discuss this project into two videos based on the payment methods. In this first video, part 1, we'll be discussing about a vending machine with offline payment method. It will accept coins as money. In this video, we'll be discussing about the components used in liquid vending machine with offline payment method and its block diagram. तो चलिए अब हम components के साथ शुरू करते हैं. Components में हम इस्तेमाल करने वाले हैं Arduino Uno, coin sensor, LCD 16x2, pump, water flow sensor and push button switch. Let us move on towards the block diagram. जैसा कि आप इस block diagram में देख सकते हैं, हम Arduino Uno इस्तेमाल कर रहे हैं as our controller board. We already know what is Arduino Uno. It has multiple digital pins and analog pins. We'll be attaching a coin sensor to the Arduino Uno and multiple push button switches as can be seen in the block diagram. Each push button switch represents a specific amount of liquid. Like the switch 1 will represent half liter, switch 2 will represent 1 liter, switch 3 will represent 1.5 liters. Whenever a user will press or push the switch 1 will send a signal to Arduino board. Then the Arduino board will identify how much amount of liquid or how much amount of water the customer has requested. Then it will display the amount or the price for that specific amount of liquid on the liquid crystal display or LCD display. Then the user or customer will need to pay the amount. The payment will be made in the forms of coin. जो पेमेंट है वो कॉइन के फॉर्मेट में करना पड़ेगा. जैसे ही यूज़र या फिर कस्टमर कॉइन सेंसर में एंटर करता है, द कॉइन सेंसर ऑलरेडी हैज सैम्पल स्टोर्ड ऑफ मल्टीपल अमाउंट. इट विल डिटेक्ट ईच कॉइन एंड इट्स प्राइसिंग और इट्स वर्थ एंड इट विल ट्रांसफर द डेटा टू Arduino Uno. Then the Arduino Uno will compare the amount entered in the coin sensor with the price of requested liquid. Arduino Uno क्या करेगा, जो अमाउंट कॉइन सेंसर में यूज़र ने या फिर कस्टमर ने एंटर की है उस अमाउंट को कैलकुलेट करेगा और कंपेयर करेगा विद द प्राइसिंग, यानी कि लिक्विड की कीमत के साथ कंपेयर करेगा. इफ़ द अमाउंट एंटर्ड इन द कॉइन सेंसर मैचेस द price of liquid requested, the Arduino board will turn on the pump. When the pump turns on, the liquid will start to flow. Here we are also using a water flow sensor. Water flow sensor क्या करेगा, तो water flow sensor डिटेक्ट करेगा कि कितने अमाउंट वाटर या फिर कितने अमाउंट का लिक्विड उससे पास हुआ है. जब जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड रिक्वेस्ट किया गया था वो पास हो जाएगा, so then the water flow sensor will send a signal to Arduino Uno and the Arduino Uno will turn off the pump. In this way, the whole liquid vending machine will work. Hopefully you understood everything. Related video के links हमारे description में available है. Thank you.